सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल पल पल। A very great morning to all my dear students. My name is Rajneesh Tyagi and I welcome to you all once again for the online classes, dear students of 9th standard. And I must tell you here today, dear students, we are going to go for the new chapter, and this chapter is taken from the book Beehive, and it is going to be the very first chapter. The title of the chapter is The Fun They Had. Okay, and we have already completed the chapter number 1 from the Moments book, and it is going to be the chapter of Beehive book. Okay, so let's start the chapter. Before you read, the story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps no exist. This is the story of the technology. This is the story of based on the future. And before the story, it is going to say that you can imagine in the future there will be no use of the books. Dear students, you can understand just like that. Today we are taking the classes, we are teaching you by technology, by digitalization, and there is no use of the books right now. So it is also the story related to with that. How will children study then? The diagrams below may give you some ideas. And how will children will do study in the future? Just look at the diagram below. Schools, the future means the students will be learning through computers, through laptops, through mobile phone. It means we can say that in the future, according to this story, there will be no use of the books, there will be no use of the notebook, pen, pencils. The study and the education will be depending on the digital area, and now you can have this experience right now because you students also taking the classes nowadays through mobile phone, through YouTube, and through digitalization. What the future is presented today. In pairs, discuss three things that you like best about your school and three things about your school that you would like to change. Write them down. This is the questions to all the students, that what are the three things you mostly like about your school, and what are the other three things you mostly uh, things what you can write down. Okay, so you will have to write down three things which are most your favorable in the schools. You can say just like the playground of the school is your favorite. Okay, the library of the school is your favorite, and the moments when we go to the tours, this moment also the favorite thing. Okay, you can say as according to you what the things are favorite of yours. Have you ever read words on a television for computer screen? Have you ever read the words and alphabets and the sentences on the screen of the computer and the television? And I hope understand that nowadays and before that you have read so many times the words, the sentences on the computer screen and on the television also, because it is not a very extraordinary and the different things for nowadays. Can you imagine a time when all books will be on computer? Can you imagine? Then that time will also come to in our life, that where we will be not having the facilities of the books. We will be having the computers and the laptops and the mobile phones in our home. And yes, this is the present time where we are having the phenomena, the facilities of the computer screens and the laptops and the mobile phones, and we usually like to spend our time on the uh, technology. Just like you, all the students are nowadays spending your so much time on the technology. You are taking your classes through computers, through YouTube, through mobile phone, and nowadays you are not going to use the most of the uses of the books and the notebooks. You are just nowadays taking the advancement and the using of the digitalization now right now. So it is a perfect and the latest examples to all the students, I think. And yes, have you ever read words on the television or computer screen? Can you imagine a time when a books will be on computer and then will be no books printed on paper?
Would you like such better? And what do you personally think? You will like this situation or you will like the situation of the classroom? You can easily understand right now, because nowadays we all the teachers are going to teach you through technology, and we are not supposed to take your classes punctually in the school campus, and you all the students are taking your classes nowadays through YouTube. So you can imagine, as students, you can understand that this thing is better for you, or the things whatever we had in the previous time, it was good. Books are good for you, teachers are good for you in front of you, or the mobile phones and the technology, and these things are good for you. So you should definitely give me the answers in the comment box. You like books in your hand or you like mobile phone in your hand? Okay, you will give the answer in the comment box of the on my YouTube channel, that what do you like? You like books in your hand, teacher in front of you, or you like mobiles in your hand? This is your choice. Okay, so Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, Today, Tommy found a real book. This is a story where Margie and Tommy are two characters. And Margie is saying to you that once upon a time, Tommy found a real book. It was a very old book. It was the old one. And yeah, students, you have noticed also one thing there. There is the date 17 May 2157. It means this is the date of the future. This is 2020, but it is 2157. It means it is the date of future, where students are in the future. जब स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर में हैं, भविष्य में हैं, एंड दे वर सरप्राइज 2021-57 में अगर उनको कोई किताब मिलती है, कोई बुक मिलती है, तो दे विल बी सरप्राइजिंग, वो सरप्राइज हो जाते हैं कि पहले लोग किताबों से पढ़ते थे. So it was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. And Margie's grandfather told her that there was a time in their childhood when they read all the stories through books, and stories were printed on the papers. तो मार्गी के दादाजी बताते हैं कि एक ज़माने की बात थी कि जब हम बचपन में पढ़ा करते थे तो हमारी किताबें प्रिंटेड हुआ करती थी और कहानियाँ किताबों में लिखा हुआ करती थी. आज के ज़माने के नहीं कि किताबें जो हैं मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टेक्नोलॉजी में, इंटरनेट पर हैं. हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था. So that was the explanation given by the grandfather of Margie. They turned the pages, which were yellow and crinky, and it was awful funny to read words that stood still instead of moving. They were the way they were supposed to on a screen. And Margie and Tommy, when they were reading that book, they were having a lots of fun. उनको किताब पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ी बहुत ही वो अलग सा महसूस करते हैं कि कितनी फ़नी है, कितनी अलग तरीके से लिखी गई है. ऑन ए स्क्रीन यू नो. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम. और जब उन्होंने वो फर्स्ट टाइम वो बुक पढ़ी, तो बुक पढ़ने के बाद उनको वही महसूस हुआ जो पहले उन्होंने जिस जिस तरह से उस किताब को पढ़ा था. सो इट वाज गोइंग टू बी अ वेरी यूनिक एंड सरप्राइजेबल थिंग, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये भविष्य के बच्चे हैं. आज से 40-50 साल का जो समय होगा बाद वाला, उस समय के बच्चे हैं, और ये बीते हुए समय की बात देख रहे हैं कि पहले लोग किताबों से पढ़ते थे. तो बुक्स जब वो पढ़ते हैं तो उनको बहुत अलग महसूस होता है, बहुत ही सरप्राइज़ महसूस होता है कि उस समय लोग किताबों से कैसे पढ़ाई करते थे. जैसे आजकल आप बच्चे जो हैं सारी पढ़ाई कंप्यूटर, लैपटॉप के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन हमारे ज़माने में तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था. हम सभी किताबों से, पेपर से, या फिर बुक्स वगैरह से ही पढ़ सकते थे. Gee, said Tommy, what a waste. When you were through with the book, you just threw it away. And
He said, Tommy, what a waste when you were through with the book. You just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's not good for plenty more. I would not throw it away. And when Guy said to Tommy, what are waste things you are having? Guy जो देखकर उसको बड़ा अजीब लगता है कि what the waste thinking you are having in your hand. ये बुक इतनी अजीब सी खराब सी क्या है ये? इसमें केवल एक ही कहानी है. There is only a one story and you know about my computer screen there are lots of story, plenty of stories are there and it is thousands of time good for good for than book. वो ये कहता है कि इस किताब से कहीं ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा तो मेरा कंप्यूटर है जिसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं उसको फेंकूंगा भी नहीं. सेम थिंग माइंड सेट मार्की. शी वॉज 11 एंड हैड सीन एज मैनी टेक्स्ट बुक एज टॉमी हैड. ही वॉज 13. मार्गी 11 साल की लड़की थी और उसने भी अपनी लाइफ में बहुत किताबें देखी, बुक्स देखी. टॉमी 13 साल का था. जितनी बुक्स टॉमी के पास थी उसने वो सारी किताबें पढ़ी थी. शी हैड वेयर डिड यू फाइंड इट. और वो कहती कि वेयर डिड यू फाइंड इट, ये किताब कहाँ से मिली. इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. व्हाट्स इट अबाउट स्कूल. वो कहता कि ये किस बारे में है, ये किताब है स्कूल के बारे में. मार्गी वॉज स्कॉफुल. स्कूल. व्हाट्स राइट अबाउट स्कूल. आई हेट स्कूल. वो कहते हैं स्कूल क्या है. स्कूल स्कूल से मुझे बहुत नफरत है. स्कूल मुझे बहुत ख़राब लगता है. आई रियली डोंट लाइक अबाउट स्कूल एंड आई रियली डोंट लाइक स्कूल टू गो. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. मार्गी को स्कूल से बहुत नफरत थी. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. और अब तो वो इतनी ज़्यादा नफरत करने लगी थी जितनी उसने पहले कभी नहीं की. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. मार्गी अपने जोग्राफी का टेस्ट दिए जा रही थी और उसके मैकेनिकल टीचर वो टेस्ट लिए जा रहे थे और जितनी बार वो टेस्ट देती थी उतनी बार उसके मार्क्स उतने ही ख़राब आते थे, उसके नंबर उतने ही बेकार आते थे. एंड जब तक उसकी मम्मी ने उसको डांटा नहीं, उसको चिढ़ाया नहीं, मारा नहीं, तब तक वो लड़की ऐसे ही करती रही. बिकॉज मार्गी डिड नॉट लाइक टू गो टू द स्कूल्स एंड शी डिडंट हैव एनी इंटरेस्ट अबाउट द स्टडीज़. उसको पढ़ाई लिखाई में, स्कूल वगैरह जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था. उसको बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं थी. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her a apple. एक आदमी था जो बहुत सारे वायर्स, बहुत सारे उसके टूल बॉक्स वहाँ पे रखे हुए थे एंड उसने उस लड़की को, मार्गी को, एक छोटा सेब दिया खाने के लिए. He has given an apple to that Margie. Then took the teacher apart. Margie had opened. He would not know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The Margie hated most was the slot where she had टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. मार्गी को हमेशा से चीज़ों से बड़ी नफरत थी कि कोई उसे होमवर्क दे, कोई उसे काम करने के लिए कहे, कोई उसे पढ़ाई करने के लिए कहे. वो हमेशा इन चीज़ों से चिढ़ती थी, हमेशा इन चीज़ों से बहुत परेशान रहती थी. शी डिड नॉट एवर लाइक टू हैव द फिनोमेना ऑफ द स्टडी इन हर लाइफ. कभी भी उसको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं आया. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड. They made her learn when she was 6 years old and the mechanical teacher educated. जब वो 6 साल की होती है तो मैकेनिकल टीचर जो है उसको टीच करना शुरू कर देते थे. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. इंस्पेक्टर ने उस कराने वाले इंसान ने मार्गी के सिर को सहलाया, उसको प्यार किया. He had to her mother, it's not the little गर्ल्स फॉल्ट. वो कहती है कि इस छोटी बच्ची का कोई भी इसमें दोष नहीं है, कोई भी उसका प्रॉब्लम नहीं है. मिसेस जोन्स, आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वाज गेटेड अ लिटिल टू क्विक. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. वो कहता है मुझे लगता है कि जोग्राफी उसको समझ में नहीं आता है और कुछ बच्चों को सीखने में टाइम भी लगता है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year level. Actually, the overall pattern of our progress is quite
satisfactory and he patted Margie's head again. और वो फिर से मार्गी के सिर को सहलाता है और कहता है कि वो अपनी उम्र के साथ धीरे धीरे सीख जाएगी और सेटिस्फेक्शन होना ही सबसे बड़ी प्रोग्रेस है. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away together. Margie को लग रहा था कि उसकी मम्मी अब टीचर को वहाँ से हटा देगी, निकाल देगी, लेकिन वो डिसअपॉइंट हुई. ऐसा नहीं हुआ. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. और टॉमी की टीचर को इसलिए हटा दिया था क्योंकि उसको हिस्ट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी. So शी सेड टू टॉमी वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. तो वो कहते हैं इसलिए कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि स्कूल में तो हमें पढ़ना लिखना होमवर्क करना ये सब कुछ ही होता है. एंड दे डोंट लाइक दैट. टॉमी लुक्ड एट हर विद very superior eyes because it's not our kind of a school. Stupid. This is the old kind of a school that they had hundreds and hundreds of years ago. वो कहता है कि स्कूल कोई आज के चलने वाली चीज़ नहीं है, ये तो कई सौ सैकड़ों साल पहले से स्कूल चलता है, पढ़ाई की जाती है और हम सभी नॉलेज लेते हैं. He added loftily, pronouncing the word carefully. Centuries ago, Margate was heard. Well, I don't know what kind of school they had. All that time ago, she read the books over the shoulders for a while, then said, anyway, they had a teacher. और वो कहती है कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि पहले क्या पढ़ाई होती थी, कैसे होती थी, किस तरह स्कूल्स थे, क्या नहीं थे, क्या थे. वो सब इन चीज़ों को एक तरफ करती है और किताब उठा करके कंधे में अपने शोल्डर पे कभी उस अपने टीचर की बातें को सुनने लगती है. एंड शी वॉज टोटली पेइंग हर अटेंशन टू हर टीचर. और उसको स्कूल जाना कभी भी पसंद नहीं था, ना ही स्कूल की बातें सुनना और स्कूल की बातें करना. Dear students, this is the story what we are going to start today about the Margie and Tommy and Gee. And आप सभी बच्चे आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. ये कंपलसरी है. दिस इज़ कंपलसरी टू ऑल. बहुत कम बच्चों ने भी आंसर्स लिखे हैं क्योंकि क्लास स्टार्ट करने के बाद मैं आप सभी से पूछूंगा भी कितने बच्चों ने वीडियोज़ को प्रॉपरली देखा, उसको सुना और सीखा और आंसर भी किया. तो ये कंपलसरी है सभी के लिए. आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखेंगे. और आज का क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि आप क्या पसंद करेंगे. आप टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ना पसंद करेंगे या फिर बुक्स. यू वुड लाइक टू हैव बुक इन योर हैंड और मोबाइल फ़ोन. सो मोबाइल या बुक आपका कोई एक आंसर हो सकता है जो भी आपको पसंद है. किस चीज़ से आप पढ़ना पसंद करेंगे. Dear students, we will meet tomorrow with a new video and a new paragraph. Till then, take care. Hey, stay healthy at your home. I miss you all. God bless you, बच्चों. Bye bye. So dear students, आपको चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है और सभी को बताना भी है, लाइक भी ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखना है ताकि मुझे लगे कि आप सभी बच्चे अच्छी सी पढ़ाई कर रहे हैं. ओके. God bless you all. Stay healthy. Bye bye.